Hello aspirants, welcome to OPSC Nexus. Today's topic is Plato for PSIR optional for OPSC and UPSC. Also this topic is important for GS paper 4 as it covers under moral thinkers. So most of the moral thinkers of Western political thought from PSIR optional and Indian political thinkers from PSIR optional will overlap with the moral thinkers which are given in the GS paper 4 ethics. So in past we have seen that many questions have come from Plato and Aristotle. So we can expect a question in ethics. So you have to understand the thinker's perspective and what is the idea he has given both in it is important both in ethics and also in PSIR. So today's topic we will discuss regarding the scope of study for Plato, what we will study. So we can divide the topic into these many portions: Socratic influence on Plato, father of political philosophy, theory of knowledge, ideas, form, theory of soul, theory of philosopher king, theory of communism, theory of justice, theory of education, and evolution of Plato. So questions will be asked from these topics. So we will study these first three topics: Socratic influence on Plato, father of political philosophy, theory of knowledge simultaneously. And you know that he is also regarded as the father of political philosophy. Then we will study theory of soul, theory of philosopher king, and theory of communism, and theory of justice separately. Okay. So before starting any political thinker, we have to understand his ideas and on what circumstances he has given the idea. Okay, so we have to know the background of any political thinker, like when he was born, what was the scenario going on in that particular state or the city state, then what was the scenario going on in the world, and on which circumstances he developed the idea. Okay, then only you can think on his perspective for conceptual clarity. Okay, so first we will know regarding Plato's roots. So he is from Athens, which is a city state in ancient Greece. So when he was born in 428 BC in Athens, growing up during the turbulent era of the famous Peloponnesian War, which was happening between 430 BC to 404 BC. Okay, so when he born during the Peloponnesian War. So what we can say that when he born in 428, what was going on in India? So it was an era, like we know that 400 BC and to 500 BC, who were the philosophers in India? Gautama Buddha and Mahavir Jaina, right? It is that time. So in Athens, Plato was born, and he given his ideas in that era. So, what was his intellectual pedigree? He was a famous student of Socrates. Now, who is the Socrates? Who has given the idea of philosophies? Okay, and even though there is no books which is related to Socrates, but his idea has been reflected in the books and works of Plato. So Plato was the student of Socrates, and he is the teacher of Aristotle. Okay, so who is Aristotle? Aristotle is the father of political science, who has given the concept of democracy, and which is nowadays prevailing in the contemporary world. So Aristotle got his idea from Plato. Then next, he was a universal polymath. Universal polymath means he had wisdom of everything. Okay, he has acquired lots of knowledge on politics, aesthetics, cosmology, and epistemology. So basically he is a very intelligent person.
Okay, now what is Peloponnesian War? So you have to remember the war name, because sometimes if the question, suppose a question has come and in that Plato's name is not mentioned, but something the question is asking, and in that this Peloponnesian War is mentioned, so you have to extract that it is like the question is from the Plato's topic. Okay, so post Peloponnesian War, what is the condition of the state, something like that, if it is asking. What happened in this war? There was It was fought between Athens and Sparta. So Athens was a city state and Sparta was a city state in ancient Greece. So what is city state? It is an political unit at that time. Okay, so Plato's formative years were entirely overshadowed by the devastating geopolitical struggle, which culminated in the defeat of democratic Athens by militaristic Sparta. Okay, so what happened? Athens was defeated, and it was deeply, impacted Plato's idea. Like, he was from Athens, and he got, so much into the war, that like the defeat of Athens, that he got affected a lot, and a thought process came to his mind that why Athens was defeated, and what we could have done, what is the preventive action, and how a state should function. Okay, what should be the ideal state, who should be the leader. His leader is known as philosopher king as per him. Okay, so he has given his all ideas based on that. So uh, what happened? He shocked by Athens' decay and eventual loss. Plato dedicated his life to uncovering the core reasons for the decline of Athens and designing a robust ideal state. So when Athens defeated, and the city state declined, so at that time like he studied a lot, and he uncovered the ideas of a ideal state. Okay, now let's see how was the Greek way of life at that time. So now what we can see in Greece is a fancy life, a fancy state, with very good tourism industry and other industrial revolution has been taken place, but it was not like that before. Okay, so it was an agrarian state, and we can see here that Greece was an agrarian state community sustained by local agricultural system. Then social inequalities. There was a huge social inequalities in Greece and in Athens. So what happened? Some The society was divided into many division, where there were slaves, okay, and some vulnerable, you know, so vulnerable communities were there. Women were so much vulnerable condition. So a strong patriarchal system was there. Okay, so there were no social equalities at all, no human rights at all. So at that time, Plato belongs to an elite family. Okay, Plato was born into one of the wealthiest and most politically active family in the Athens, receiving an elite education standard of class. All right, so what happened? So when Plato was born, he born to a elite family. Okay, so we have seen that in ethics, most of the time, what we have noticed that some philosophers, okay, those who have given the idea of philosophy, how to how to lead a life, what is ethics, what is values, what is morality, what is truth, what is virtue, those philosophers who have given all these things, and we are now reading in their ideas in political science, philosophy, and ethics. So they are basically belong from elite family. Okay, so there is a psychological survey has happened. One European psychologist who has done this, you will study this in ethics, that what he has given his you know um, theory is, like, suppose a human being, and what is his wants. If he doesn't have food to eat, he doesn't have clothes to wear, and he doesn't have
stay in a house, then his basic needs first he will fulfill, right? He day and night he will struggle to fulfill his basic needs. No other thought process will come to his mind. His mind will be acquired by how I can gain these wealth, or these my uh, bread and butter, so that I will survive. That is his first wish. Once he will fulfill his basic needs, he will go for luxury. Like gote choto ghar heigala, kichi khaiba pai achi, then we have clothes to wear, then that person will go for the next thought. What is the next thought? That I will acquire some luxury, kichi luxurious ଜିନିଷ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣିବି, ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବି. If you have a small house, you will go for a bungalow. Like that, a person's psychology, okay, generally human being psychology, say he will seek for, you know some luxurious life. Then again, an advanced luxurious life, okay, they will buy some, vehicles, gadi aniba, bada ghar kiniba, other investment kariba, business kariba, all the materialistic things he will fulfill in his life. Then what happened, by gradually he is progressing, and he has achieved all the materialistic thing what a human could ever imagine of. So once he has received, or he has gained and earned all the wealth he wants, he has everything, everything materialistic thing to fulfill his life. Then his next thing is, how I will achieve a social status. Now ताको social status दरकार हबो, जे मु भी मान्यगण्य व्यक्ति मान भितर रहबी, मोर भी गोटे नेम हबो, फेम हबो, everything I want now. So he what he will think, he will work for to gain the name and fame. Okay, once he has the luxury and name and fame, everything, all the materialistic thing and name and fame also there, then the next thought, what he wants now, then again, now he will think of, like, mu janma hebar karan kଣ, why I have come to this earth, why I was born, why God has sent me here, whether God exists or not. The philosophical things he start exploring in his mind, and he invests all his time in that. Like, the spiritualism will develop, philosophical idea will develop, and they will give an idea how to lead a life, what is truth, satyasra talasre bahari jiva. If a person is having everything in his life, then that state of mind will come to a person where they will search for the idealism things. Okay, what I'm saying is, it is a experimentation, it has happened, a psychological experimentation generally of human being. So it has done by a psychologist. So exceptions are there, I'm not saying that everybody are same, but rarest to rare scenario exceptions are also there, but in general this is the truth. So आमे जेमती देखि परिबा हमर इंडिया रे से टाइम रे जो फिलोसोफर माने थिले, जो माने कि किछि आइडिया हमको दे जायछन्ति जे हाउ टू लिव आवर लाइफ, हमें जीवन केमती बितेबा उचित, लाइक महावीर, जैन एंड गौतम बुद्ध, दे आर आल्सो फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, राइट? तो जेते भी आमे इंपोर्टेंट फिलोसोफर्स देखिबा, दे ऑल यू नो come from a royal family, they have everything wealthiest. Okay, ଏବେ ଏବେ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ କି ସେ ତାର ଜୀବନ ମାନେ କାହିଁକି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ତାର ସତ୍ୟତା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମଣିଷ କେମିତି ଫିଲୋସଫିକାଲ ହେବ, କି ଆଇଡିଆ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସେଇ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। କେବେ ବି ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ओके, unless and until you have achieved everything what a human wants. So जो मैंने elite family रे जन्म होई थांती, they have everything to do, I'm sorry, they have everything, माने भोग करबा पई सब जिंस तांका पाखरे थाए, still now they are self content with all these things. So now they search for the other thing, they go for the philosophical ideas. So this is in general I told you. So now come back to Plato. So Plato is from a elite family, and he is well educated, he has achieved all his academics, and his family also from political background. So when Athens got defeated, he got devastated, it deeply affected his thinking process. Okay, so what is his ultimate turning point in life? Death of Socrates and exile. So what happened? uh, Socrates was against the sophist. Okay, so he was against the sophist. So who are the sophists?
Sophists were the so-called intellectuals of ancient Greece. So they, as per them, they were giving the ideas, and they were asking, as per them, everything should function. Okay, state should function as per their theories, and a human should live life, law should function, everything should happen as per them. But they were materialistic. Okay, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଥିଓରି ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଗୁଡାକ is not the universal truth. So that's why Socrates came and he founded a method of called dialectic methods. He told that ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ we should be rational enough. Okay, ଆମେ rational ହେବା ଜରୁରୀ. rational ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଯେଟା ଦେଖିବା ଯେ ସେଟା real ରେ ମାନେ ମାନେ ତର୍କ ଯୁକ୍ତ ନା ନୁହେଁ, ମାନେ ସେଟା real ରେ ଠିକ ନା ଭୁଲ, ତ ଆମେ ତର୍କ କରିପାରିବା। ତ ତର୍କ କରି କରି ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ, that is the real truth or real knowledge as per Socrates, and Plato also accepted that. But when ଯୋଉ ସେ ଆଥେନ୍ସ ର ଯିଏ ଲିଡର ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଯୋଉ ସୋଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କୁ ଏଜ ଏ ଥ୍ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ଜେଲ ରେ ପୁରେଇକି he punished him and he sentenced to death. He was sentenced to death. So ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଫେଥ୍ ଟା ଟିକେ he was shattered. Okay, ତାପରେ ସେ abscond ହେଇଗଲେ, it caused his self exile. ସେ ତାପରେ ପଳେଇ ଗଲେ ଏଥେନ୍ସ ରୁ, କୋଉଠି ଗଲେ ନା Plato fled Athens, traveling across Europe and Egypt for over a decade to study geometry, philosophy and diverse cultures. से यूरोप इजिप्ट जाइकी बहुत सारा स्टडी कले, जियोमेट्री उपरे, फिलोसफी उपरे, डाइवर्स कल्चर उपरे एक्सपेरिमेंट करिले, देखिले, सर्वे कले। देन विथ नाउ तांका पाखरे बहुत सेल्फ नॉलेज थिला जे हाँ यस मु जोटा माने सॉक्रेटिस को तो सीखी छी सेटा ही रियल ट्रूथ। देन ही केम बैक, and after he came back from the Europe, after he came back from the Egypt and the other part of Europe, he came to his place and he started a academy. Okay, the academy, the first university in Europe to nurture wise rulers. तो सेठी से वाइज रूलर्स मानन केमती तयारी करा जिवो सेति पय गोटे से एकेडमी स्टार्ट कले। सेथिरे से तांकर आइडिया, थियोरी ऑफ स्टेट, थियोरी ऑफ आइडिया, थियोरी ऑफ नॉलेज ए सब को सेठी से कोन कले ना पढेइले, टीच ट्रेनिंग देले। तो एबे जे हमें जति भी पढ़िले, दैट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, टू नो द थिंकर एंड टू अंडरस्टैंड हिज फिलोसफी एंड हिज आइडियाज। एबे हमें पढ़िबा जे तांकर जो आइडिया गुडा को थिला से गुडा को भीतर फर्स्ट आइडिया हैला थियोरी ऑफ नॉलेज, एंड एटा एग्जाम पर्सपेक्टिव में पढ़िबा। एबे जे हमें जति पढ़ले प्लाटो को लाइफ विषय से एटा को भी एग्जाम रे आसीबनी। You no need to write that in any exam, just for understanding purpose, to understand his theories. Okay, तो आपनकर एग्जाम रे कोन आसीबो ना मे बी आसी पारे डायरेक्टली आगो आसुतला प्लाटो थियोरी ऑफ नॉलेज। ओके, एबे किंतु सेमती डायरेक्ट आसुनी, आउ इन यूपीएससी, बोथ इन यूपीएससी एंड यूपीएससी, ओपीएससी रे आगरो डायरेक्ट आसुतला, एबे से मिक्स करके देबो। 2023 पूर्व तो प्रति वर्ष प्लाटो को विषय क्वेश्चन आसुतला, आइदर जस्टिस आसीबो न नॉलेज आसीबो और प्लाटो किछि भी गोटा आसुतला। बट एबे सब से मिक्स करके दोची, तो दैट्स व्हाई आपण को भी टॉपिक को छाड़ी परिबेनी, आपण को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दरकार। सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। सो जो भी क्वेश्चन आछबो मिक्स करके भी क्वेश्चन आसी पारे, नॉलेज और जस्टिस विषय, नॉलेज और एजुकेशन विषय, then you have to quote this. Any other thing if coming not related to Plato, any other topic also theory side it is asuchi, then आपण सेते बेले भी प्लाटो कर theory of knowledge को quote करि पारिबे। also it is very important for ethics रे निहाती भाबरे आपको आपण quote करि पारिबे। so before starting Plato's theory of knowledge, आमे देखिबा जे क्वेश्चन आसुची केमती। ओके, यूपीएससी रो क्वेश्चन ए सब रियलिटी शैडो ऑफ आइडियाज। ओके, कमेंट एमती गोटे कोटेशन दे देथिबो, जेमती मोस्ट ऑफ द टाइम कोटेशन दे दिए। for no law or ordinance is mightier than knowledge, एटा भी प्लाटो को थ्योरी ऑफ नॉलेज रो आछि। ए साइड रे मु थीम दे देछि जे को बेसिस रे से क्वेश्चन पचारिछि, आपण एटा को स्क्रीनशॉट नै कि पढी पारिबे। These are the questions. Critically examine the Plato's theory of form. Okay, so एटा 2024 रे आसीछि, आ ओपीएस रे भी प्लाटो रो बहुत क्वेश्चन आछि।
ଆପଣ PYQ ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ here is one more questions, down रे bottom ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, explain Aristotle's critique of Plato's idealism। ଏଟା जो ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ idealism जो theory of knowledge ଅଛି ତାଙ୍କୁ जो Aristotle criticize କରିଛନ୍ତି, ओके, ସେଇ ଉପରେ ଅଛି। ତ there are lot of question we can expect, and also जदि भी ଏବେ direct question आସୁନି, that we know that Aristotle, Plato, these are important chapters, so OPSC and UPSC both are unpredictable। केते केते बेले ସେମାନେ dynamic question ର trend ଚାଲିଥିବ, all of a sudden direct question पकेଇ देबे, but you have to prepare for both, you have to be prepared for both, okay। So Plato's theory of knowledge, let's start। Plato's theory of knowledge, idea and form, okay। So knowledge कौन ଆଉ idea कौन, ए दुईटा पाखापाखि समान जिनस। फॉर्म कौन, फॉर्म है फिजिकल वर्ल्ड, ओके। तो तांकर ए जो theory of knowledge अच्छी से कोठू इन्फ्लुएंस पाइछंती। The major influence has been Socrates, who believed that it is more important to know what ought to be। तो knowledge important जिनस कौन, what ought to be माने कौन हेबा उचित, and the application of knowledge is a virtue, okay। तो knowledge कौन ना what ought to be, आउ जो जेतेबेले आमे application of knowledge करिबा, जहा माने ठीक जिंसटा आमे हम रियल लाइफ रे अप्लाई करिबा, माने पर्सनल लाइफ रे, प्रोफेशनल लाइफ रे एंड स्टेट पाई, that is called virtue। so ये virtue word टा very important both for ethics and PSIR। so virtue word आसिला माने आपण जाने जिबे जे सॉक्रेटिस और प्लेटो को रिलेट करिकि आपण को लिखिबा को पड़िबो। then Heraclitus' work on world of change state that which changes cannot be true, okay। से कौन कहले ना, जोटा चेंज होउची, कोटा चेंज होउची, फिजिकल वर्ल्ड चेंज होउची, राइट, सेटा ट्रू नुह, बिकॉज इट कीप चेंजिंग, ओके। तांगर कंटेक्स्ट कौन, द कंटेक्स्ट ऑफ द थ्योरी लाइज इन सॉक्रेटिक ऑब्जर्वेशन, नॉलेज इज वर्च्यू। तो एटा वेरी इंपोर्टेंट, नॉलेज इज वर्च्यू, दिस इज द की वर्ड। एमती भी क्वेश्चन आसी जाय पारे, नॉलेज इज वर्च्यू, ताहले आपण प्लेटोस थ्योरी ऑफ नॉलेज यू हैव टू राइट। if it is not coming, only any other topic related to theory of knowledge coming also, you have to quote this, knowledge is virtue, okay। this is the Socratic's observation, and which is followed by Plato, and also again followed by Aristotle, wherein Socrates states true knowledge is that which led to right and ethical conduct in the life। तो आमे जहाँ भी हमर ethical conduct अच्छी, which is right, which is wrong, आमे ताकू बुझिबा, आउ सबु बेले हमर ट्रू नॉलेज कोन, आमे जेतेबेले हमर ethical conduct को, ethics को हम लाइफ रे अप्लाई करिबा, सेटा हला ट्रू नॉलेज, ओके। This was directly opposed to the sophist theory of attaining knowledge, which Socrates believed only taught self-interest and temporary knowledge। तो सोफिस्ट माने जो वे रे नॉलेज एक्वायर करबा पई कहउथिले, जे जहा से माने कहउथिले सेटा को ही मने रखबा पई कहउथिले, so that is not the true knowledge as per Socrates। Socrates कोन कहउथिले ना, that is not the correct way to achieve the knowledge। correct way to achieve the knowledge is what ना, हमर ethical conduct को हमें मानिबा, आउ ethical conduct कोन हमें जानिबा, ethics कोन हमें जानिबा, what ought to be हमें कोन जानिबा, तापरे जाई हमें ताको हम पर्सनल लाइफ रे यूटिलाइज करिबा, and also we will utilize while forming running this state। से criticize करथिले सोफिस्ट को। Similar to Socrates, Plato criticized sophists for basing knowledge on the physical world, which is prone to change, and knowledge which changes cannot be true knowledge, okay। तो से सोफिस्ट मान को क्रिटिसाइज करके कोन कहथिले, जे सोफिस्ट मान फिजिकल वर्ल्ड को बेसी इंपोर्टेंस दउथिले, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बेसी इंपोर्टेंस दउथिले, किंतु प्लाटो कहले जे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ता सब दिन पय रहनी, इट कीप चेंजेस। तो सेथि पय आमे मटेरियल वर्ल्ड को कि फिजिकल वर्ल्ड को बेसी इंपोर्टेंस देबा नै, हमर ट्रू नॉलेज हला हम आईडिया को एक्वायर करिबा हला। आईडिया कोन, अबे सपोज गोटे आईडिया अछि, माने if you do good then it will come back to you, this is an idea। एटा को माने from time immemorial एटा चली आसीची, जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, एटा ही ट्रूथ है कि रहइबा, राइट। तो एटा गोटे आईडिया, आ ताकू हमें तले रिफ्लेक्ट करबा हम पर्सनल लाइफ रे, सेटा हेजबो हमर वर्चू वर्क हमें करूची, राइट। तो एमिति जो प्लाटो हमर वो जो आईडिया देछंती से टाइम रे,
यू नो 400 BC रे से टाइम रे जो हमर इंडियन फिलोसोफर माने जो किसी आइडिया देछन से आइडिया गुडा को एबे जाय अछि we have those ideas now it is keep passing from generation to generation we are applying or not that is a separate thing but idea are immortal right से आइडिया गुडा को एबे भी अछि किंतु से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड सेते बेले जहा सब थला एबे अछि की से सब नाही सिस्टम पूरा चेंज हो जायछि तो दैट्स व्हाई प्लाटो कहले जे फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट द ट्रू नॉलेज इज आइडिया ओके से दीटा भितर डिवाइड कर देले फॉर्म और नॉलेज एंड आइडिया भितर ओके फॉर्म हैला फिजिकल वर्ल्ड एंड नॉलेज हैला आइडिया ट्रू आइडिया दैट इज कॉल्ड नॉलेज तो हमको फास्ट कौन करबा पय पड़बो ना नॉलेज एक्वायर करबा पय पड़िबो सो ही इज मोर एम्फसाइजिंग ऑन एक्वायरिंग नॉलेज तापर ट्रू नॉलेज कौन प्लाटो डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ आइडिया ओके जोटा मु कहली according to him the physical world cannot be real as it is prone to change all right only ideas are permanent as they do not change and thus represent true knowledge correct according to Plato the एबे गोटे कोटेशन हबो ए कोटेशन को आपण घोषिबा को पड़िबो आइदर ए कोटेशन ही क्वेश्चन हे कि आसी पारे नहले जदि आसीनी देन ये कोटेशन आपण कोट करि पारिबे कोठी कोट करि पारिबे आपण एसे रे कोट करि पारिबे PSIR ऑप्शनल रे कोट करि पारिबे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देन आल्सो यू कैन कोट इट इन एथिक्स द आइडिया ऑफ virtue is the idea of action the ultimate object of virtue is to attain knowledge the knowledge of virtue is the highest level of knowledge is attainable and so is virtue is attainable से कहउचंती जे आइडिया हला virtue okay the idea of virtue is the idea of action the ultimate object of virtue is to attain knowledge आमे जदि जोटा प्रकृत माने ठीक कथा आमे जदि सेटा को करिबा देन एक्शन नेबा ताहले सेटा को virtue कुआ जिवो तो virtue आमे केते बेले करि परिबा जेला आमे नॉलेज एक्वायर करि परिबा तो आमे हाईएस्ट नॉलेज भी एक्वायर करि परिबा attainable and virtue is also attainable right now से आउ कोन देले ना डिवाइडेड लाइन एनालॉजी Plato defined ways to differentiate between opinions and knowledge through analogy of divided line. The divided line systematically represent the different knowledge level. से कौन कहले से सोसाइटी को हला से सोसाइटी को 3 फेज रे डिवाइड करथिले फर्स्ट ऑफ ऑल से कहले जे किछि लोक अछंती दे आर यू नो वी विल स्टडी इट इन द थ्योरी ऑफ सोल एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस बट प्लाटो को सब थ्योरी को किछि किछि परिमाण रे गोटे भी लाइन सब थरे ऐड करबा को पड़िबो तो सी कौन कहले जे तीन प्रकार नॉलेज लोक अछंती फर्स्ट कैटेगरी रो हेले जे हायर लेवल ऑफ नॉलेज ताका पाखर अछि पूरा बहुत माने रेशनल से माने रीजनेबल से माने ताकर बहुत हाईएस्ट वर्च्यू अछि से माने के से माने ना फिलोसोफर किंग ओके से माने राजा हेबा पई योग्य तांको लेवल रो तळ माने तांको लेवल रो अन्य लोक माने नहंती से माने गोटे हायर लेवल रो लोक माने से माने जो प्रकार थॉट प्रोसेस करि पारबे अन्य माने करि पारबे नै तो से माने सेही लेवल रो नॉलेज एक्वायर करछंती केमिति एक्वायर करले सेटा हमें थ्योरी ऑफ एजुकेशन जेतबे पढिबा प्लेटो को पढिबा नेक्स्ट ता तळ लोक माने हेले को माने से माने हेले यू नो कैपिटलिस्ट ओके कैपिटलिस्ट माने तांकर काम कोन से तांकर फिलोसोफर टू टिके तांकर कम नॉलेज हला से कौन करिवे से बिजनेस करिवे ट्रेड एंड कॉमर्स करिवे सोसाइटी को चलेइबे ट्रेड एंड कॉमर्स रे इकोनॉमी रे राइट ताठू टिके तळ लोक हेले से माने सोल्जर्स हेबे मिलिटरी को जिवे से माने फाइट करिवे युद्ध करिवे देश को रक्षा करिवे हला तांकर माने नॉलेज लेवल टा टिके कम राइट तो ए तीनी प्रकार लोक अछंती ए नॉलेज समस्त को नॉलेज समस्त को पई इंपोर्टेंट ओके किए को प्रकार नॉलेज एक्वायर करि पारिबो से लोक भितर से क्वालिटी अछि ओके तो समस्त फिलोसोफर किंग हे पारिबे नै समस्त सोल्जर हे पारिबे नै समस्त यू नो कैपिटलिस्ट भी हे पारिबे नाही तो ता भितर से क्वालिटी ता थिबा नियाती जरूरी हम इंडियन फिलोसोफी रे अछि स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भया भय ता अर्थ हला कोन मो कोन मो भितर को क्वालिटी ता अछि मु सेही धर्म को निभेबी मो भितर जदि फिलोसोफर किंग हबार क्वालिटी अछि मु सेतिक नॉलेज एक्वायर करि पारिछि then I should go for philosopher king you know mu sei profession choose karbi mu I should not go for soldiers or capitalist
जो मानकर जो नॉलेज अच्छी जो जेतिकी नॉलेज से माने एक्वायर करि परिबे राइट तो आमे से नॉलेज को आमे यूटिलाइज करिबा टू आवर बेस्ट तो सेटा स्टेट आम पई भी बेटर फॉर आवर पर्सनल लाइफ देन आमे समस्त मिसिक जदि आम निज निज पई काम करिबा सोसाइटी पई काम करबा देन डेफिनेटली वी आर नाउ वर्किंग फॉर अ स्टेट एंड इट विल बी आइडियल स्टेट ओके तो एबे आमे नेक्स्ट पढिबा दी फोर फेजेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन ए नॉलेज को आमे केमिति एक्वायर करि परिबा हला प्लाटो कोन कोन फोरटा स्टेज कहले देखंतु फर्स्ट स्टेज है इमेजिनेशन सेकंड है बिलीफ थर्ड है थिंकिंग एंड फोर्थ है परफेक्ट इंटेलिजेंस तो फर्स्ट कौन करबा ना इमेजिनेशन करबा इमेजिनेशन माने डे ड्रीम नुह है इमेजिनेशन माने जोटा रियलिटी रे हमें करि परबा ताको हम इमेजिन करबा गोटे वर्चुअस थिंग को हम इमेजिन करबा तापर हमें बिलीव करबा ताको जे हां एटा हेई परिबो हमर सेठी बिलीव थिबा दरकार तापर थिंक करबा थिंकिंग सिस्टम डेवलप करबा जे केमिति एटा करि परिबे तापर परफेक्ट इंटेलिजेंस हमें गेन करबा हला तो जे कोनसी नॉलेज एक्विजिशन रो तार लोएस्ट स्टेप कोन फर्स्ट लैडर कोन हम जे सीढ़ी चढ़ी के जिबा फर्स्ट कोन आसिला इमेजिनेशन इमेजिनेशन करबा निहाती जरूरी नाउ यू शुड इमेजिन योरसेल्फ एज एन ओएस ऑफिसर आपण इमेजिन करछंती ना सेति पय तो स्टार्ट करछंती प्रिपरेशन तापर इमेजिनेशन कर सारला पर बिलीव करिवे जे हां मो द्वारा हेई परिबो तापर थिंक करिवे कोन कले मु हेई परिबी हेई सारला परे तापर मु कोन करिबी तापर आपनको पाखर परफेक्ट इंटेलिजेंस आसीबो आपण यू विल बिकम एन आईएएस और ओएस राइट सो प्लाटो बहुत माने ताकर आइडिया टा नाउ ट्रू और फॉल्स राइट सो हिज नॉलेज एक्विजिशन से कोन कहले जे फोरटा स्टेप रे हेबो प्लाटोस इमेजिनेशन बिलीफ थिंकिंग एंड परफेक्ट इंटेलिजेंस आ लोएस्ट स्टेप टा कोन इमेजिनेशन तो फर्स्ट इमेजिनेशन करबा जरूरी इन प्लाटोस वर्ल्ड इमेजिनेशन इज रिगार्डेड नॉट एज ए इमोशनल लेवल रे केबे भी इमेजिनेशन करबेनी डे ड्रीमिंग फिक्शनल थिंग करबेनी ओके केते बेले सेटा करिवे जेते बेले आपन को यू नो यू शुड हैव दैट perfect intelligence rational thinking the word is rational okay emotional level but rather is an actual reality based on appearances तो आमे कोन करबा ना एक्चुअल रियलिटी को इमेजिन करबा आमे फर्स्ट जानिबा रेशनल थिंकिंग करबा दरकार तापरे इमेजिन करबा तापरे नेक्स्ट लैडर गुडा को चढ़िबा प्लाटो आ कोन कहले shadows poetry and conventional art were all regarded to be false illusion by plato ए सब को false illusion कहचंदी कोआडे जो फिक्शनल shadow कथा गुडा को पोएट्री गुडा को कन्वेंशनल आर्ट गुडा को जो फिक्शनल जिंस गुडा को ताकू से false illusion कहचंदी जे सब जिंस चिंता करके लाभ नै हमें रियलिटी को चिंता करबा he argued that what you see is not actually rhetoric you are moving beyond the shadow but you might not get it true meaning से कहते जे आमे इल्यूजन पछरे मरीचिका पछरे दौड़िबा कथा नुहे आमे सब बेले ट्रू जिंस पछरे दौड़िबा दरकार ट्रू जिंस को रियलाइज करबा दरकार देन वी शुड मूव फॉरवर्ड आवर नॉलेज एक्विजिशन थिंग ओके आउ से आउ कोन कहचंती जे आमे जो गुडा को सब ठीक जिंस भाबुचू सेटा रियल रे ठीक जिंस माने आमे जोटा को ट्रू भाबुचू रियलिटी भाबुचू से गुडा को रियलिटी नुहे रियलिटी कौन रियलिटी है आइडिया जो आइडिया को आमे को गेन करबा को पड़िबो जे व्हाट इज रियली आइडिया एबे एबे हम पाखरे हजार हजार कोटेशन अछि राइट आमे जाई कि गूगल कर देबा कि एआई रे पचार देबा गिव अबाउट दिस कोटेशन रिगार्डिंग बेस्ट ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द यू नो बेस्ट कोटेशन रिगार्डिंग द रिलेशन हजार हजार कोटेशन आसी से कोटेशन को तो जने जन्म देइचंती माने जने भाबिचंती तो से कोटेशन माने जते बेले स्टार्ट होतला एटा से टाइम रो कथा से आइडिया गुडा जते बेले स्टार्ट होतला कोटा आइडिया ठीक ना भूल को आइडिया को हम फॉलो करबा कथा को आइडिया यूनिवर्सल एटा सेते बेले रो कथा तो सेते बेले से कोन कहले जे ना से हमें कहले हमको आइडिया को भाबबा को पड़िबो ट्रू मीनिंग को भाबबा को पड़िबो हमें एमती मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पछरे दौड़िबा कथा नु आइडिया को इंपोर्टेंट देबा कथा ताको हमें रिफ्लेक्ट करबा कथा हमर पर्सनल लाइफ रे एंड इन द running of state. For instance, consider rhetoric, but what you see is not actually rhetoric. We are unconscious of what we are seeing and realm of imagination. आमे जो गुडा को देखु चंती सेटा गुटे प्रकार imagination he is saying. His like सबले हमर all glitterings are not gold, right? तो सेमिति आमे जो गुडा को हम लाइफ आखा पाखरे घटुची
सेटा रियल रे आमे भाबुचु जे एटा एटा सेटा सेई जिंस नुह किंतु किछि अन्य जिंस होई थाए तो रियलिटी किछि अलगा थाए ओके सो व्हाट ही इज सेइंग रियलिटी एज शैडो ऑफ आइडियाज से कहले रियलिटी कोन ना आइडिया रो शैडो ना कोन कोन हुए एक्चुअली लाइफ रे कोन हुए सपोज गोटे आइडिया अछि जे if you do then good thing will return to you right eta गोटे आइडिया तो एटा जदी आमे हम पर्सनल लाइफ रे यूटिलाइज करिबा आमे सेही प्रकार लाइफ बंचिबा देन से गुड थिंग हम पाखु आसीबो तो सेटा रियलिटी हे गला नै तो शैडो हला ना नै आइडिया रो तो से कोचे जहां भी घटुची फिजिकल वर्ल्ड रो सेटा हला शैडो ऑफ आइडियाज extending his state he reiterates that reality is not what is perceived in the physical world but rather what is represented in the world of idea से सेम जिंस को से कहले नाउ एटा देखंतु एटा हला प्लाटो रो एलिगरी ऑफ केव ओके सो एठी से एक्सप्लेन करछंती आइडिया को यू नो फॉर्म को गोटे एग्जांपल देकी से कहछंती गोटे केव अछि ए केव भीतर किछि लोक अछंती बंदी हेकी तो सामने रे फायर जळुची फायर सामने रे गोटे रिफ्लेक्शन आसुची रियल वर्ल्ड रो तो रियल वर्ल्ड कोठी अछि बाहर अछि आउटसाइड ऑफ द केव ए लोक माने केबे भी केव रु बाहर को जाई नांती तांकर थॉट प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस सब एति की जिंस को नेकी सीमित तो से माने कोन देखिले बाहर गोटे जिंस होची तार रिफ्लेक्शन टा ए जो वर्ल्ड रे देखिले आ से माने भाबिले जे एटा है रियलिटी ओके तो एटा ए रियलिटी को भाबी कि से माने सारा जीवन जीले बट रियलिटी एटा की रियलिटी एटा नो outside of cave or reality is there knowledge is there एमाने भावचंती लाइट केवल फायर रु हे पारे बट आउटसाइड रे सन भी अछि राइट हु इज द सोर्स ऑफ एनर्जी तो एमाने ए सब जिंस को केबे देखि नांती तो आमे कोन करूचे आमे गोटे इल्यूजन ऑफ फॉल्स जिंस को देखुचे हम आखा पाखरे आ आमे भाबुचे जे एटा ही रियलिटी तो आमे रियल जिंस को देखिबा को चाहुने राइट तो केते बडे आमे रियलिटी को देखि पारिबा जेते ए लोक माने बाहर को आसीबे ए केव रु बाहर को आसीबे तांको जने एस्केप करेबो हला बाहर को आसीला परे से माने देखिबे जे बाहर कोन अछि ना रियल वर्ल्ड अछि एक केव रु बाहर बाहर भी बहुत बड़ा वर्ल्ड अछि जोटा कि ट्रुथ राइट तो एबे एटा केमती कंपेयर करले थ्योरी ऑफ नॉलेज सहित जे आमे आम पाखरे नॉलेज कम अछि सेति पे आमे जहां भी देखु जे सेटा से जो रिफ्लेक्शन गुडा को आमे भाबुचे जे एटा रियल वर्ल्ड किंतु से गुडा को रियल वर्ल्ड नो हमको जेते रियलिटी नो सेटा आमे जेते ट्रू नॉलेज एक्वायर करिबा आइडियाज एक्वायर करिबा तापरे जे आमे जानि परिबा जे आमे हमर आई खोलिबो हमर आई ओपनिंग हेबो तापरे जे आमे ट्रू जिंस गुडा को देखि पाबे जे अच्छा ट्रू जिंस हला आइडिया आइडिया रो रिफ्लेक्शन हला दी मेटाफिजिकल वर्ल्ड राइट तो आमे एग्जांपल रे सपोज आमे कोन कहि परबा आमे एग्जांपल रे कहि परबा जे एबे सपोज आपण कोन कहचंती आपण एबे स्टार्ट करचंती प्रिपरेशन आफ्टर 1 or 2 year of preparation you will realize that जहा आपनकर जो thought process थिला knowledge थिला सेटा माने drastically it will get changed after 1 or 2 years okay इते drastically change हो जे आपण सब जिंस को आपनक जहा भी आखा पाखरे सब जिंस घटुची you will see in a different perspective जने नॉर्मल लोक जे कि यू नो सिविल सर्विस प्रिपरेशन करि नाही आ आपनक भितरे गोटे माने ह्यूज डिफरेंस आपण देखिबा को पाइबे जहा भी घटुची आपण तार माने माने तार रियलिटी को देखि पारुथिबे किंतु से माने ताको रियल हिसाब रे न देखि कि ताको से माने गोटे किए केमिति हिसाब रे देखौची से हिसाब रे से माने देखुथिबे ओके रियलिटी देखि पारिबेनी से माने बट यू कैन सी द रियलिटी बिकॉज़ यू हैव द नॉलेज नाउ ऑलराइट आउ गोटे एग्जांपल ला सपोज वी आर सीइंग द रील्स इन इंस्टाग्राम राइट ए इन्फ्लुएंसर इज मेकिंग रील्स लाइक से माने को प्लेस को जानती गोटे स्मॉल एग्जांपल से माने गोटे आपन को देखे देबे रील रे टाइम ती अछि सेमती आउ गोटे अछि जे हमरा आसे देखिबे जे रियलिटी वर्सेस इंस्टाग्राम रियलिटी रे से जगह हजार हजार लोक थिबे से केमिति एस्केप हे कि से जगह गोटे वीडियो बनेथिबो किंतु आपण रियलिटी रे आपण तार जो वीडियो को देखि कि भाबबे जे एटा ही से जगह रियलिटी से केते फिल्टर पके देथिबो केते कोन करथिबो बट रियलिटी समथिंग एल्स तो आपण एमती हजार हजार रील देखिला पर आपण गोटे वर्ल्ड को इमेजिन कर देथिबे जे एमिति भी वर्ल्ड अछि बट सेमिति रियलिटी तार लाइफ ही नथिबो सेमिति जेमति से रिप्रेजेंट करूची राइट सो दीज ऑल आर द फिक्शन सेमिति रियलिटी अलगा जिंस थाए आउ फिक्शन अलगा जिंस थाए तो सेटा को देखिबा पई हमको वी नीड दी ट्रू नॉलेज जेमिति कि फॉर एग्जांपल हमारा जो पॉलिटिकल यू नो लीडर्स गुडा कछंती पॉलिटिकल पार्टी गुडा कछंती थ्रू आईटी सेल
they are capturing the psychology of the citizen, right? ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ୍ କୁ ଏମିତି ଆସିବ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ରେ, ଆପଣ ବାୟସ୍ଡ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ବିକଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ thought process को capture करा होची. Okay, so these all are already, these all are already written in a theory जे केमिति की साइकोलॉजी को कैप्चर करा जाए. तो आपण जदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ी चंती, आपण से थियोरी को पढ़ी चंती, देन ही आपण जानि परिबे जे ओहो एटा ए जिंस करा होची. तो नाउ दिस political party is capturing our psychology, mass level रे mass capture करा होची, psychology capture करा होची. ओके, intellectuals को capture करा होची. तो आपण को पाखरे जदि से knowledge ता अछि जे एटा ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड हे सारिची, आ बहुत सारा टाइम सेटा इट हैज अकर्ड, तो एबे भी सेही जिंसटा रिपीट होची. सो आई विल नॉट गेट इनटू द ट्रैप. किंतु जहा पाखरे नॉलेज नाही से ट्रैप हे जीवो, राइट? तो प्लाटो सेही कथा कहबा पई चाहतंती. तो प्लाटो कोन कहले जे फिजिकल वर्ल्ड हला टेम्पोर, जोटा फिजिकल वर्ल्ड अछि सेटा रिफ्लेक्शन ऑफ आइडिया. ओके, तापरे से एटा कोन कहले, इट स्टेट्स दैट आइडिया आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड. आइडियाज गुडा कोन इंडिपेंडेंट अछंती, माने वर्ल्ड रो रिफ्लेक्शन से गुडा कोन, दे आर द इंडिपेंडेंट and independent reflection or shadows of the form called ideas in our physical world are imperfect. तो आमर जो आइडिया रो रिफ्लेक्शन गुडा कहला, शैडो गुडा कहला कोठी फॉर्म्स रे, फिजिकल वर्ल्ड रे. फिजिकल वर्ल्ड हला इम्परफेक्ट बट आइडिया हला परफेक्ट, राइट? तो जेते शैडो आसुची, शैडोटा पूरा करेक्ट आसे कि आसेनी? तो सेति पय जो जहाँ भी हमार वर्ल्ड रे चलीची, तो दैट इज नॉट परफेक्ट, दैट इज इम्परफेक्ट, copied, mutilated, extended and perishable feature. तो से कहले जे materialistic world टा जो अछि सेटा हला perishable. So unlike forms, particular are finite, they change. Okay, then allegory of cave हमें पढ़िबा. allegory of cave कोन, जोटा हम already explain कर देछि. In support of his theory of form, Plato gives allegory of cave analogy. According to it, like men in caves, ignorant men consider shadow as a reality. When pushed out of the cave into the sunlight, they realize that the considered reality was just a shadow. Then ideal state. Ideal state kono, his physical world was temporary. It is most important to conduct oneself and the state with superiority of idea and over matter and philosophy over physics. So ideal state केतेबेले हबो ना, जण जदि अधिका इंपोर्टेंस दबो फिलोसफी को फिजिक्स ठारू एंड सी माने ह्यूमन बीइंग ठारू अधिका आइडिया माने अधिका इंपोर्टेंस देबो आइडिया को. ओके, तो सेते बेले जाई गोटे आइडियल स्टेट आमे गठन करि परिबा. वी कैन फॉर्म ए आइडियल स्टेट. तो अबे हमें हमरा थियोरी ऑफ नॉलेज पढ़िले जे द बेसिक एसेंस ऑफ थियोरी ऑफ नॉलेज कोन जे हमें सब द आइडिया आर इमोर्टल बट द फिजिकल वर्ल्ड टेंड्स टू चेंज. तो आइडिया सबले वर्चुअस हबा दरकार, आइडिया सबले ट्रूथ हबा दरकार. एंड ट्रूथ को हमें कोन करबा ना, जेतेबेले हमें हमर जो आइडिया को हमें एप्लीकेशन करबा सेटा है जो वर्चुअ. तो वर्चुअस वर्क इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर सिटीजन्स एंड फॉर द स्टेट एंड द स्टेटमेंट्स. ओके, तो से सबले परफेक्शन पछरे दौड़ी थिले के प्लेटो. ही वाज ऑलवेज इन फॉर अ परफेक्शन. जे लीडर हबा से परफेक्ट हबा दरकार, सिटीजन हबा परफेक्ट हबा दरकार, स्टेट हबा परफेक्ट हबा दरकार. किंतु अरिस्टोटल कोन कहले, से तांको आइडिया को सपोर्ट करले. से कहले ओके आपण जो आइडिया गुडा को कहले दैट ऑल आर ट्रू, आई आल्सो एग्री, बट आपण जो परफेक्शन पछरे दौड़ुचंती दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज परफेक्ट. तो से कोन कहले, से कहले जे हमें दुईटा जिंस को इंपोर्टेंट देबा. आपण कहले जे फिजिकल वर्ल्ड रो किछि वैल्यू नाही, एटा हला शैडो, तो हमें सब बळे आइडिया को ही इंपोर्टेंट देबा. बट व्हाट एरिस्टोटल टोल्ड, he told that we should give both idea and form, because without form idea doesn't have any importance. जदि कोनोसी गोटे फिजिकल जिंस नाही, आपण से आइडिया को का ऊपर रिफ्लेक्ट करिवे, काहाकू देखि कि आपण कहबे जे ए आइडिया से फॉलो करूची कि करूनी बोले, राइट? तो एबे हम पढ़िबा अरिस्टोटल क्रिटिसिज्म थ्योरी ऑफ फॉर्म. से एटा गोटे क्वेश्चन आसी पारे आपनकर 10 मार्क रे भी आसी पारे, 20 मार्क रे भी आसी पारे, 20 और 15 मार्क्स रे भी आसी पारे. तो जदि दीटा क्रिटिकली एग्जामिन पकोची प्लेटोस थ्योरी ऑफ नॉलेज, देन आपन को बोथ लिखिबा को पड़िबो
इक्वाली डिवाइड करदेवे थ्योरी ऑफ नॉलेज और एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म को जो जिते मार्क आसो इक्वाली डिवाइड करके लिखिए जदि खाली नॉलेज आसूची ताहले एटा लिखिबा दरकार नहीं आपण खाली गोटे लाइन रे लिखिदेबे जे एरिस्टोटल हैज यू नो slightly criticized and told this third main argument but जदि केवल एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म आसी गोटे लाइन रे लिखिदेबे थ्योरी ऑफ नॉलेज कोन प्लेटो और गोटे डायग्राम करदेबे allegory of state को allegory of cave को लिखिबा दरकार नहीं सेठी बट थ्योरी ऑफ नॉलेज जदि आसुची देन allegory of cave को स्लाइटली एक्सप्लेन करा जो गोटे दुई लाइन रे बट जदि एरिस्टोटल क्रिटिसिज्म खाली आसी हम करबानी ओनली हमें बेसी इंपोर्टेंस देबा एई क्रिटिसिज्म केमती से क्रिटिसाइज करचंती ओके now let's start. While Plato took the side of rationalism and rejected empiricism to understand the truth, Aristotle criticized Plato by favoring both empiricism and rationalism to understand the truth. Okay, truth को understand करिबा पई Plato कोन कले से empiricism को reject कर देथिले आ कहा को सपोर्ट करथिले ओनली rationalism को आइडिया को सपोर्ट करथिले बट प्लाटो कोन कहले बट एरिस्टोटल कोन कहले ना दुईटा जिंस इंपोर्टेंट फॉर अस बिकॉज़ ही ऑलवेज यू नो supported the middle path सब जगह से मिडिल जो भी थ्योरी हमें तंकर पढ़िबा he has supported the middle path that's why his theory are now also in practical it is followed right तापरे example ब्लैक ब्यूटी इज ए हर्स गोटे घोड़ा अच्छी से हला ब्लैक आमे ताको कहबा जे ए घोड़ाटा हला ब्लैक ब्यूटी तो घोड़ा अच्छी गोटे हर्स अच्छी दैट्स व्हाई आमे ताको माने हमर आइडियाटा एक्सप्रेस करि पारुछे ना यदि से घोड़ा ही न थांता आपण केमिति कहतांते ब्लैक ब्यूटी इज ए हर्स जदि कोन से घोड़ा ही न हर्स ही नाही ब्लैक कलर ही नाही ना वेयर यू विल यू नो शो योर आइडियाज this is very practical aristotle what aristotle is saying is a practical thing. Example, black beauty is in horse, attribute a substantial form, horse to a certain thing, the animal black beauty, and without that form black beauty would not exist, right? Then another example, how can a white object be said to participate in or copy the form of whiteness? Is the form of whiteness white itself? How can there be a whiteness without anything which is white? तो आमे गोटे जिनस को व्हाइटनेस कहबा जदि व्हाइट बोली किछि जिनस ही नाही तो केमिति से आइडिया को आपण प्रकाश करिवे ओके so these two example we have to give then according to Aristotle forms if they have existed would be epistemologically atoes serving no practical purpose से कहते जे जदि फॉर्म ही नाही देन आइडिया रा भी किछि वैल्यू नाही forms cannot be essence if they are separated since essence are intrinsic features of things forms are irrelevant to human conduct and so must be set aside from inquiries into ethical virtue hence the physical world cannot be ignored considering it as a mere world of illusion आमे physical world को गोटे illusion कहि परिबेनी एटा भी practically घटुची okay the matter was potentially and form actually in his famous third main argument eta gote tangar famous argument jota ki we have to quote he argued that if a man is a man because he partakes in the form of man then a third form of man would be required to explain how man and the form of man are both men okay this logic will extend till infinity and therefore theory of form doesn't stand in general test of limitation this argument is now famously called as third main argument ए जो third main argument अछि एटा दीटा गोटे third main जदि नाही then how he will explain what is truth and or what is wrong okay what is false so that's why he has given the third main argument and this is also really practical if things doesn't exist then how we can explain the ideas right so you have to explain this in Plato's Aristotle criticism of theory of form then this is the PYQ we have seen already so this is regarding the Plato's theory of knowledge our next class will be Plato's theory of justice and education and Plato's theory of soul then Plato's theory of state these are interrelated so we will take it in the next class and if you have any questions you can write in the comment section so I will address it thank you so much we have please subscribe our YouTube channel for more videos and share with your friends to like help them out and those who are taking PSIR optional
Please share these videos to them as well, and please like and subscribe the Instagram as well. We are in also in Instagram, so you will be notified regarding the next classes. Okay, thank you so much.